Greetings, students. This is Bhavana Dubey. Today, we are going to study carbon and its compounds, which is chapter number 4 in the textbook of class 10th science. Today, we will cover the topics the covalent bond, tetravalency, and occurrence of carbon. Firstly, we will see the introduction, the percentage of carbon. In the Earth's crust, the percentage of carbon is 0.02%, that is present in the form of minerals like carbonates, bicarbonates, coal, and petroleum. And in the atmosphere it is present in 0.03% in the form of carbon dioxide. Carbon is also known as a versatile element. The reason is it forms the basis for all the living organisms and many things which we use. As you can see in the given picture, there are so many different types of things which we are using in our daily life, including the things which are present in our body, like nucleic acids, proteins, all these are present in our body. Along with that, when we talk about the different things which we eat, carbohydrates, lipids, these are the things which we eat. So in these things also carbon is present. अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें ये find out करना है that the given substance whether it contains carbon or not, then what we have to do? Firstly, we have to take the given material and after that we have to burn that material. When we pass the gas which is formed by burning the given material through the lime water, if the lime water turns milky, then the given material it contains the carbon. अगर लाइम वाटर मिल्की नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि जो गिवन मटेरियल है उसमें कार्बन नहीं है. Here one more thing is given, DNA. Our DNA is also made up of carbon. Now we will see how carbon always forms covalent bond. The atomic number of carbon is 6, so its electronic configuration is 2, 4, where in the K shell 2 electrons are present and in the L shell 4 electrons are present. Now to attain the noble gas configuration, carbon should either gain 4 electrons or it lose 4 electrons. Or there is one more possibility that it can share its 4 electron with some other element. अब यहाँ पर अगर ये gain करता है 4 electrons को so that it can complete the octet, तो इसके लिए इसे क्या करना होगा? इसके लिए इसे energy चाहिए. अब न्यूक्लियस जो है जिसमें 6 प्रोटॉन्स ऑलरेडी हैं तो उसके लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि वो और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसको होल्ड करे. सो फॉर दैट इट नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी विच विल बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर कार्बन. लेकिन अगर ये लूज करने की ट्राई करता है अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं तो फिर क्या होगा? उसके लिए भी उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और किसी भी जगह से अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. सो इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क फॉर the carbon to gain or lose 4 electrons. यहाँ पर एक चीज जो है जो ध्यान देना है वो ये है कि अगर हम यहाँ पे गेनिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं कार्बन में तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि ऑलरेडी कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसमें 6 प्रोटॉन्स हैं तो 4 और इलेक्ट्रॉन्स अगर हम वहाँ पर एकोमोडेट करेंगे तो उसके लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. और अगर हम यहाँ पे लूजिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो लूज करने के लिए द कार्बन एटम इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी which will be difficult for the carbon atom. Now we will see the tetravalency of carbon. Firstly, we will see what is tetravalency. Tetravalency is the sharing of 4 valence electrons with other atoms of carbon or with atoms of other elements. Tetravalency मतलब क्या होता है? कोई भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं या तो फिर उसकी शेयरिंग हो कार्बन के साथ में या तो फिर दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके साथ में भी शेयरिंग हो सकती है. तो ये जो शेयरिंग ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम किसे बोलते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, दीज आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर वो 4 हैं और उन 4 की शेयरिंग हो रही है दूसरे एटम्स के साथ में या तो फिर कार्बन एटम्स के साथ में तो उसे हम बोलेंगे टेट्रावैलेंसी. यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन एटम जो है इसके फर्स्ट ऑर्बिट में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इन द नेक्स्ट ऑर्बिट 4 इलेक्ट्रॉन्स and the protons are 6, along with that the neutrons 6. So in the nucleus protons as well as neutrons are present. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कार्बन है इसने कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म किया है हाइड्रोजन के साथ में. तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के हैं और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन अपना यहाँ पे शेयर करेगा कार्बन के साथ में. सो फाइनली वी गेट CH4 which is known as मीथेन. यहाँ पर जो आपको सिंगल लाइन दिख रही है इट स्टैंड्स फॉर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. Covalency of the atom. Electrons contributed for mutual sharing of electrons
by the atoms in order to acquire the stable noble gas configuration. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से वो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर पाए, and that thing is known as covalency. Now we will see in which form the carbon occurs in the environment. Now there are two states in which the carbon occurs in the environment. First one is the free state and the second one is the combined state. Firstly, we will talk about the free state. Materials that are made up of carbon only, they occur in the free state. The examples are diamond, graphite and fullerene. Next is the combined state. In the combined state, the materials are made up of carbon combined with the other element. मतलब ये है कि combined state में जो materials होते हैं उनमें carbon के साथ में दूसरे elements भी present होते हैं. Examples are carbon dioxide, calcium carbonate, carbohydrates. Here you can see the example of carbon dioxide and carbonate. CO2, here one atom of carbon is there, along with that two oxygen atoms are there. So it occurs in combined state. When we talk about the carbonate molecule, here along with one carbon atom, three oxygen atoms are present. So it also occurs in combined state. आज हमने क्या पढ़ा? How carbon exists, what is the tetravalency of carbon, what is the covalency of carbon, and occurrence of carbon. Do like, share, and subscribe. Happy learning!